Good morning students. I am Pawan Kumar Singh, your physics teacher from Shiv Jyoti Educational Group. Today we will take the revision class of chapter number 9, chapter number 10 and chapter number 11. So the class come to the chapter number 9, that is ray optics and optical instrument. इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन वाला पार्ट डिलीट कर दिया गया. सो वी विल टॉक अबाउट ओनली द रिफ्रैक्शन. सो व्हाट इज द रिफ्रैक्शन? द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम अ मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज व्हाट? is known as the refraction. Okay, suppose this is the incident ray. Okay, this is the another medium. तो यहाँ से लाइट बच्चों बेंड हो रही है. Okay, this is your incident angle and this is your refracted angle. So when light travels from a rarer medium, from where? From the rarer medium to the denser medium, it deviates towards the normal. And when light travels from the denser medium to rarer medium, it deviates in the direction of the, or you can say it travels in the direction of the normal, or you can say it travels away from the normal. Okay, when light travels from a denser medium to a rarer medium, it deviates away from the normal. Now come to the laws of refraction. What is the laws of refraction? There are two laws. First law, the incident ray, refracted ray and the normal at the point of incidence lie on the same plane. The second law, which is also known as the Snell's law, the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of angle of what? Refraction is a constant for a given pair of a media and that for a given color of the light, and this constant is known as the refractive index of the second medium with respect to what? With respect to the first medium. Suppose if I is the angle of incidence in the first media and r is the angle of refraction in the second media, then according to Snell's law, sin I upon sin r, that is constant, and n is known as their what? That is the refractive index of the second medium. Now come to the some examples of the refraction. First of all, apparent depth. Okay, when an object in a denser medium is viewed from the rarer medium, कोई ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में अगर उसको हम रेयर मीडियम से देखते हैं, then it seems to be raised towards the surface. This is called your apparent depth. तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा सरफेस के ऊपर शिफ्ट दिखाई देता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? apparent depth. You can see in the diagram, this is the real position of the object, but due to the refraction, object यहाँ दिखाई देने के बजाय बच्चों यहाँ पे दिखाई दे रहा है. So this depth, okay, this depth is known as your apparent depth, and this one is what? This is your real depth. Now come to the second example of refraction, that is the twinkling of a star. Twinkling of a star is due to what? Due to the refraction of starlight and at the different layer of the atmosphere. Another example, apparent shift in the position of sun at the sunrise and sunset. Sunrise और sunset के टाइम में सन की पोजीशन थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है. किसकी वजह से हो रही है बच्चों? रिफ्रैक्शन की वजह से. एक्चुअल आंसर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से. तो यू कैन सी द डायग्राम. एक्चुअली में सन अभी यहाँ पर है, बट ड्यू टू द रिफ्रैक्शन सन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो दिस फिनोमेना इज नोन एज द अपरेंट शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द सन. नाउ सन इज विजिबल बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. नाउ कम टू द total internal reflection. Okay, in total internal reflection, please keep one thing in your mind कि जो light जो travel करेगी बेटा in total internal reflection from denser medium to rarer medium, तो इसी में आपको total internal reflection देखने को मिलेगा. Okay, suppose this is the denser medium and this is your rarer medium. अगर light travel कर रही है denser medium to rarer medium तो ये normal से दूर bend होगी और एक ऐसा angle आएगा जिस टाइम पे ये नॉर्मल से दूर बेंड होते हुए वापस से उसी मीडियम में एंटर हो जाएगी. तो जिस एंगल के बाद ये वापस से सेम मीडियम में एंटर कर रही है, यानी यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बजाय रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, उस एंगल को हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पे क्रिटिकल एंगल. सो यू कैन सी व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वी ऑलरेडी नो, एंड इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल. ओके, नाउ जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आ रहा है बच्चों? 90 डिग्री, तो उस एंगल का इंसिडेंस एंगल जो होगा दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस बियॉन्ड द क्रिटिकल एंगल, okay, then what? Then the total internal reflected, then the rays will be get totally internally reflected in the same medium, and this phenomena is called as the total internal reflection. Now what is the relationship between the critical angle and the refractive index? This is the formula, that is n equals to 1 upon sin c, where c is what? This is the critical angle. Now come to the application of total internal reflection.
फर्स्ट वन, द ब्रिलियंस ऑफ द डायमंड, जो डायमंड चमकता है उसके पीछे रीजन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इट मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज हाई अबाउट n equals to 2.42 and after the critical angle the C equals to get what is after the critical angle, here the C equals to 24.41 degree. Moreover, the faces of the diamond are cut in such a way that ray light entering in the crystal undergoes multiple total internal reflection. Okay, जितने ज़्यादा faces cut होंगे उतने ज़्यादा हमें total internal reflection diamond में देखने को मिलेगा. This multiple reflected light comes out through one or two faces, so these faces appear glittering. ओके एक से ज़्यादा फेसेस से ये लाइट बाहर निकलते हुए दिखाई दे तो हमें ये फेसेस कैसे दिखाई देंगे, डायमंड की ग्लिटर करते हुए. नाउ कम टू द अनदर वन एग्जांपल ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज योर मिराज. मिराज में क्या होता है बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट सनी डेज में अगर ऑब्जेक्ट है आपका, अगर वो ऑब्जेक्ट आपके पास जब उस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट रेज है वो लाइट रेज कुछ इस तरीके से आती है बच्चों. देखो दिस इज द नॉर्मल अपीयरेंस. ओके, बट मिराज के अंदर आपके पास लाइट इस तरीके से आ रही है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन. ओके, नाउ यू नो वेरी वेल कि लाइट आपकी आइज में जिस डायरेक्शन से फाइनली एंटर करेंगी ऑब्जेक्ट आपको वही दिखाई देगा. इट मींस लाइट आपकी आइज में, इस ऑब्जेक्ट की लाइट आपकी आइज में इस डायरेक्शन से एंटर करे, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा. दिस फिनोमिना इज नोन एज द मिराज. Now come to the total reflection prism. Okay, students see the diagram which is given here. Okay, यहाँ पे अगर इस डायग्राम को देखें फर्स्ट वाले प्रिज्म में, तो यहाँ पे इंसिडेंट रेज ए और बी की फॉर्म में, यानी ऑब्जेक्ट इज ए बी, इंसिडेंट रे से फॉल हुई और ऑब्जेक्ट हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है. ओके, ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें इस मैनर में दिखाई दे रहा है. यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट हमें रिवर्स मोड में दिखाई देगा. इसका मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट पोजीशन में रखा हुआ है यानी इस तरीके से रखा हुआ है तो ये इन्वर्टेड दिखाई देगा. ओके, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन. ओके, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो होगा अगर वो इस तरीके से रखा हुआ है तो ड्यू टू दिस प्रिज्म ऑब्जेक्ट हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड फॉर्म में दिखाई दे रहा है. सो एट राइट एंगल प्रिज्म इट इज कॉल्ड द टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म. जो राइट एंगल प्रिज्म है इसको हम टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को वैसा का वैसा रिफ्लेक्ट करके हमें दिखा रहा है. द टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आपने देखा होगा इन जो ऊपर डायग्राम से उसमें किसी में भी रिफ्रैक्शन फिनोमेना हमें नहीं देखा. हमने क्या कौन सा फिनोमेना देखा बच्चों, रिफ्लेक्शन. तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेस्ड होता है. विद द हेल्प ऑफ दीज प्रिज्म द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे कैन बी चेंज. ओके, इसकी हेल्प से डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम चेंज कर सकते हैं. नाउ कम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 2.5, यू ऑलरेडी नो, एंड क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री. When a ray of light makes an angle of incident more than what, 42 डिग्री, तभी हमें यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. अगर इंसिडेंट रे का एंगल जो बनेगा विद नॉर्मल अगर लेस देन 42 डिग्री बनता है तो यहाँ पे हमें इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने के बजाय रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा. Come to another application of total internal reflection, optical fiber. Okay, optical fiber consists of the number of long fibers made of the glass और quartz whose n is 1.7, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कितना होगा 1.7. they are coated with a layer of material of lower refractive index that is 1.5, यानी जो आउटर मटेरियल होगा, यानी मैं इस मटेरियल की बात कर रहा हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनर मटेरियल के कंपेयर में लो होगा. कितना होगा बच्चों 1.5. when light incident on the optical fiber at the angle greater than the critical angle, और हमें मालूम है कि जब लाइट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा इसमें एंटर करेगी या फिर जो लाइट एंटर करेगी उसका इंसिडेंट एंगर अगर क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ड्यू टू दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अ रे ऑफ लाइट कैन ट्रेवल थ्रू द ट्विस्टेड पाथ. ओके, इंसिडेंट रे जो होगी वो ट्रेवल करती रहेगी, वहाँ पे रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, और विदाउट द रिफ्रैक्शन इट विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, और यू कैन से इन अ ट्रेवल इन अ ऑप्टिकल फाइबर with the help of total internal reflection. Now what is the uses? Used as a light pipe in a medical and optical diagnosis. It can be used for the optical signal transmission. Okay, it is used to carry the telephone, television and computer signal as a pulse of light. Now it is used for the transmission and reception of electrical signal which are covered into a light signal, which are converted into the light signal. Now come to the next topic, that is a refraction at a spherical surface and by the lenses. First of all, come to the refraction at the spherical surface. Suppose this is the object, this is the incident ray. Okay, this is your spherical surface. After refraction, this light goes to this point. Okay, you can see this is the O, this is I, this is the C, which represents center of curvature. Okay, now this is the object distance and this is your image distance. This is your incident angle and this is what? Refracted angle.
Now in the previous diagram you can see that tan angle NOM that is equals to MN upon OM. Similarly tan angle NCM that is equals to MN upon MC. Tan angle NIM that is equals to MN upon MI. We already know that angle of incidence according to the previous diagram, that is I equals to MN upon OM plus MN upon MC. ओके बच्चों बेसिकली यहाँ पे 10 वर्ड आना चाहिए था, बट ड्यू टू द स्मॉल एंगल, जब यहाँ पे एंगल हम बहुत स्मॉल कंसीडर करते हैं तो 10 I इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द I, सो हमने यहाँ पे I लिया है. सिमिलरली R इक्वल्स टू एंगल NCM माइनस एंगल NIM, और यहाँ पे अगर हम NCM की वैल्यू पुट करें, जैसे हम बात करें कि NCM और NIM क्या है, तो NCM इज हेयर, NIM इज हेयर, तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट कर दो बच्चों. ओके तो R की वैल्यू मिल जाएगी आपको MN अपॉन MC माइनस MN अपॉन MI. नाउ बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ N1 sin I इक्वल्स टू N2 sin R, वैल्यू पुट करो जो आपने R की और I की यहाँ पे निकाल रखी है, तो इनको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा N1 I इक्वल्स टू N2 R. Now substitute I and R in the formula, we will get N1 upon OM plus N2 upon MI, that is equals to N2 minus N1 upon MC, where OM, MI and MC represent the magnitude of distance. Applying the Cartesian sign convention, Cartesian sign convention आपको मालूम है, लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव, राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव, तो उसको फॉलो करते हुए OM की वैल्यू U आ जाएगी, MI की वैल्यू प्लस V होगी और MC की वैल्यू R होगी. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू इन द इक्वेशन वी गेट N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U दैट इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R. तो बच्चों वो था रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए या फिर स्फेरिकल सरफेस के लिए. नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस. ओके तो इस मेथड को या फिर जो फॉर्मूले हमने यहाँ पे ड्राइव किए हैं इसको भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. सो लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर अ थिन लेंस, कंसीडर अ थिन लेंस of the refractive index what of refractive index N2, okay, formed by the spherical surface ABC, अभी हम डायग्राम में देख लेंगे, and ADC. Now let the lens is kept at the medium of refractive index of N1. अभी हम डायग्राम में देखते हैं. Now you can see the diagram. Okay, here we have used a lens in place of a spherical surface. So यहाँ पे O is the position of the object, I is the position, I1 is the intermediate position of the image, और this I1 is act as the object. Okay, and then this I we will get, और ये final image आपकी बनेगी. Okay, now the spherical surface ABC, I am talking about this one. This is spherical surface of radius of curvature R1. फॉर्म इमेज एट I1, ये I1 पे इमेज बना रही है, यानी इस स्फेरिकल सरफेस की वजह से I1 पे इमेज बन रही है, और ADC की वजह से कहां पे इमेज बन रही है बच्चों, इस पे, यहाँ पे इस पोजीशन पे, दिस वन. तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा V, और I1 की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों V1, यानी दिस इमेज डिस्टेंस is denoted by V1 and this image distance is denoted by V. बट ध्यान रखना इसके लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा. Now then we can write that N2 upon V1 minus N1 upon U that is equals to N2 minus N1 upon R1. ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस केस में ऑलरेडी ड्राइव कर रखा है. Now this image I1 will act as the virtual object. Okay, virtual object it means object रियली में वहां पे नहीं है, ऑब्जेक्ट की वहां पे बस इमेज बनी हुई है. दैट्स व्हाई वी विल से दैट वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सरफेस ADC एंड फॉर्म्स द इमेज एट V. इमेज कहां बन रही है बच्चों V पे. ना हम लोग इस फॉर्मूले को फिर से अप्लाई करेंगे बट ADC कंसीडर करते हुए, देन वी विल गेट द फॉर्मूला दैट इज N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V इक्वल्स टू N1 माइनस N2 अपॉन R2. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1. Now we will have to add equation number 1 and equation number 2. जब दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों हमारे को रिजल्ट मिलेगा N1 upon V minus N1 upon U that is equals to N2 minus N1 bracket start 1 upon R1 minus 1 upon R2. Now you have to learn this formula. Okay. Now dividing through by N1, इस पूरे को हम अगर N1 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से N1 ये हट जाएगा बच्चों. ओके ये भी N1 हट जाएगा, और यहाँ पे जो ये N1 है ये भी हट के किस क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा. तो फॉर्मूला वी विल गेट 1 upon V minus 1 upon U equals to N2 upon N1 minus 1 bracket start 1 upon R1 minus 1 upon R2. Now students, if the lens is kept in air, it means N2 upon N1 must be equals to the N. So the equation can be written as जो N2 upon N1 था वहां पे आप N पुट कर दोगे तो we will get a equation in this form. Okay. Now from the definition of the lens we can write that if U equals to infinity, F equals to V. Okay. Now substitute this value, यानी U की जगह आपको infinity पुट करनी है और V की जगह बच्चों क्या पुट करना है, F पुट कर देना है. Then we will get the equation 1 upon F minus 1 upon infinity that is equals to N minus 1 bracket start 1 upon R1 minus 1 upon R2. Now this is the formula, that is 1 upon F equals to N minus 1 bracket start 1 upon R1 minus 1 upon R2. You have to learn this formula. Okay.
Now come to the convex lens. For the convex lens we will take f positive, ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है, r1 भी पॉजिटिव होगा और r2 भी क्या होगा बच्चों, that will be negative. And when we put the values of these variables in the formula, we will get the new formula for the convex lens, that will be 1 upon f equals to n minus 1 bracket start 1 upon r1 plus 1 upon r2. Now come for the concave lens. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्केव लेंस की. ओके, जो कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला ड्राइव किया था उसी तरीके से हम कॉन्केव लेंस का भी करेंगे. बस हमें f की वैल्यू माइनस से पुट करनी है, r1 की वैल्यू नेगेटिव होती है और r2 की वैल्यू क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम इट विल बी पॉजिटिव. सो इट फॉर्मूला विल गेट दैट इज 1 अपॉन f इक्वल्स टू n minus 1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन r1 minus 1 अपॉन r2. Now come to the lens formula, 1 upon v minus 1 upon u that is equals to n minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2. ओके, और जो प्रीवियस इक्वेशन हमने ड्राइव कर रखी थी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे को दोनों इक्वेशन को समराइज करके, एक तो इसको और एक जो आपकी प्रीवियस इक्वेशन है, इट मीन्स मैं इसकी बात कर रहा हूँ दिस वन, तो दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u. और ये फॉर्मूला आपने अपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा. Okay, now come to the linear magnification. What is linear magnification? If h naught is the height of the object and hi is the height of the image, then the linear magnification will be equals to m, that is equals to hi upon h naught, and it is also denoted in the terms of object distance and image distance, that will be v upon u. Now come to the power of lens. What is the power of lens? Power of lens is the reciprocal of the focal length expressed in meter, and the unit of the power of lens is diopter. You have to learn the unit of the power of lens. This is very important. Now come to the combination of thin lenses in contact. Suppose we are taking two convex lenses. Okay, these are thin type of convex lens. The lens is L1, another one is L2. The focal length is f1, another one is f2. Consider a thin convex lens of focal length f1 and f2 kept in a contact. Okay. Now according to the lens formula, 1 upon, for the first lens I am talking about the lens formula for the first lens, it will be 1 upon f1 equals to 1 upon v1 minus 1 upon u. ओके, फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहीं बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं बनेगी, उस इमेज की लोकेशन को मैंने v1 से रिप्रेजेंट किया है. सो 1 upon f1 equals to 1 upon v1 minus 1 upon u. This image will act as the virtual object for the second lens and the final image is formed at I. It means यहाँ पे फाइनल इमेज आपकी बन रही है. So for the second lens it will be 1 upon f2 equals to 1 upon v minus 1 upon v1. अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, यानी फर्स्ट लेंस का जो लेंस फॉर्मूला था और सेकंड लेंस का जो लेंस फॉर्मूला, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 upon f1 plus 1 upon f2 equals to 1 upon v1 minus 1 upon u plus 1 upon u minus 1 upon v1. और इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इट विल बी 1 upon f1 plus 1 upon f2 equals to 1 upon v minus 1 upon u. अब आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान आ रहा होगा, इट इज इक्वल्स टू 1 upon f. So you can say that 1 upon f equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2. It means if the two lenses are replaced by the single lens of the focal length f, it will be f. Okay, the image is formed at v and we can write 1 upon f equals to 1 upon v, 1 upon f equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2. If 1 upon f equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2, then we can write this formula in the terms of power, that is p equals to p1 plus p2. Now the next topic, magnification. That is a combination of lenses. Combination of lenses में magnification किसके equal होगा? Okay, it will be equals to m. That is the final magnification. That is equals to magnification of first lens into magnification of second lens into magnification of third lens and so on. Now come to the next topic and very important topic, that is the refraction through a prism. प्रिज्म से आप सभी फैमिलियर है. ओके, दिस इज द प्रिज्म. ओके, तो यहाँ से इंसिडेंट रे इस पे फॉल हो रही है. ओके, इट मेक्स द इंसिडेंट एंगल ऑफ आई. दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज योर इमर्जेंट रे. इमर्जेंट रे के साथ जो एंगल बन रहा है दिस इज I2, इसको हम E से भी डिनोट कर सकते हैं. ओके, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड एंगल, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड एंगल, दिस इज योर सेकंड रिफ्लेक्टेड एंगल, this is angle of prism. Okay, then ABC, this is your the angle between the first normal and second normal, that is this angle. I am talking about this angle. Now come to the ABC is a section of a prism and AB and AC are the refracting faces of BC is the base of the prism. BC जो है prism का base है and angle A is what? This is the angle of prism. A ray PQ, this incident of the face AB and at an angle of I1 and QR is the refracted ray inside the prism.
which makes the two angles, that is R1 and R2. RS is the emergent ray at the angle of I2. इसको हम E से भी डिनोट कर सकते हैं, आपके NCERT बुक में इसको E से भी डिनोट किया गया है. Now the angle between the emergent ray and the incident ray is the angle of deviation, which is denoted by sometime in this manner also. Okay, the angle of deviation को हम D से भी डिनोट कर सकते हैं और इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं. So now come to the derivation. According to the previous diagram, you can say that angle Q plus angle R equals to 180 degree. बच्चों इस derivation को देखने के लिए आप अपनी NCERT बुक भी सामने ओपन करके रखना. Now angle A plus M, this is already known, that is equals to angle 180 degree. Now in triangle QMR, R1 plus R2 plus angle M, this is angle, some property of a triangle, that is equals to 180 degree. Now comparing equation number 1 and comparing equation number 2, we will get R1 plus R2. It means refracted, first refracted angle and second refracted angle, the sum of these refracted angle, that is equals to angle A. And from the triangle QRT, I1 minus R1 plus I2 minus R2, that is equals to angle of deviation, since exterior angle equal to the sum of the opposite interior angles. So we can say that I1 plus I2 minus bracket start R1 plus R2, that is equals to angle of deviation, that is denoted by here D. So but we know that R1 plus R2, that is equals to A, so we will replace I1 plus I2 by A. So I1 minus R1 plus I2 minus R2, that is equals to angle of deviation, and by summarizing this one, I1 plus I2 minus R1 plus R2, that is equals to D. We already know that R1 plus R2 equals to what? That is angle of prism. तो इसको यहाँ पे put कर देना, so हमें मिलेगा I1 plus I2 equals to D plus A. It is found that the particular angle of incidence, the deviation is found to be minimum value of the D. Okay, this is your angle of deviation. Okay, जिसको हम लोगों ने डी और कैपिटल डी और स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट किया है. एट द मिनिमम डेविएशन ऑफ पोजीशन I1 दैट इज इक्वल्स टू I2 दैट इज I. जब मिनिमम डेविएशन की बात करेंगे तो उस टाइम में I1 और I2 की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. मान लेते हैं इसको I होगी और R1 और R2 की वैल्यू भी इक्वल होगी, इसको भी हम मान लेते हैं कि स्मॉल r होगी. सो उस केस में स्मॉल डी दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल डी. Hence the equation number 3 जो हम लोग ने previous केस में लिखा था, that is R plus R equals to A, it means 2R equals to A, it means small r equals to A by 2. Now we already know that I plus I equals to A plus D, that is I equals to A plus D divided by 2. Now let the refractive index of the prism is denoted by n here. Then we can write that n equals to sin I upon sin R, और I और R की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट कर ली in terms of A and D. So what is the value of the final refractive index of the prism? That is sin A plus dm divided by 2, okay, and whole divided by sin A by 2. अब हमें ये मालूम है कि जब स्मॉल एंगल्स के लिए साइन की वैल्यू जो होती है या फिर साइन थीटा की वैल्यू जो होती है, दिस इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू थीटा. इट मींस वी कैन रिमूव द साइन साइन फ्रॉम हेयर. यहाँ से साइन हटा सकते हैं. बच्चों यहाँ पे मैंने कट नहीं किया है, इसको इस तरीके से कट नहीं किया है, बल्कि साइन के ये साइन वर्ड है, इस साइन को हटाया मैंने. ओके, ये मत सोच रहे कि सर ने आपने कट कर दिया, साइन से साइन कट हो गया, नहीं. यहाँ पे इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है इसलिए इस साइन को हटाया, और इसकी वैल्यू भी बहुत स्मॉल है इसलिए मैंने इस साइन को यहाँ से हटा दिया है. सो फाइनल फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू a प्लस dm डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय a बाय 2. अब यहाँ से 2 को 2 से कट कर दो. सो फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू n21 दैट इज इक्वल्स टू a प्लस dm डिवाइडेड बाय m, एंड द dm इक्वल्स टू n21 माइनस 1 इन होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय n. नाउ कम टू द ID कर्व. This is the ID curve which represents the graph between the angle of deviation and the angle of incidence. You can see the ID curve of the prism is shown here. In this graph you can see that at the particular angle, at the particular angle of incidence the deviation is minimum, but after when we increase the angle of incidence or either we decrease the angle of incidence, the deviation get increased. ओके, तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे जो एंगल ऑफ डेविएशन जो आ रहा है वो मिनिमम कितना आ रहा है बच्चों, 440 डिग्री, और ये किस पे आ रहा है बच्चों, 40 और 60 डिग्री के बीच में. नाउ इट इज फाउंड दैट व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज द डेविएशन डी डिक्रीजेस एंड रीचेस अ मिनिमम वैल्यू एंड देन इंक्रीजेस. दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. ओके, इट मींस अगर एग्जाम में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन आ गया देन यू नीड टू ड्रॉ दिस ग्राफ आल्सो. Now students, we will start the optical instrument. In optical instrument we will discuss about the microscope and telescope. In the microscope we will deal with the simple microscope and the compound microscope. तो पहले हम बात करते हैं simple microscope की. A simple microscope is the converging lens of a small focal length. वो जो छोटा सा माइक्रोस्कोप होता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं छोटा सा लेंस होता है जिसमें एक ही लेंस को हम यूज करते हैं, 2-3 लेंस यूज नहीं करते. तो एक लेंस से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करके देख रहे हैं तो दैट टाइप ऑफ लेंस या फिर दैट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप.
एक ही लेंस यूज किया गया है। सो यू कैन सी दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। ओके, एक ऑब्जेक्ट हमने इस पोजीशन पे प्लेस कर दी है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको यहाँ पे मैग्नीफाइड फॉर्म में दिखाई दे रही है। तो डी इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, यू इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ओके, दिस इज द आई। Now working की बात करते हैं। The object to be magnified is placed very close to the lens and the eyes are positioned close to the lens on the other side. eyes को लेंस के बिल्कुल पास में रखना है लेकिन दूसरी तरफ। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द पोजीशन ऑफ द इमेज गेट चेंज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है कि इमेज की पोजीशन क्या बनेगी, वो भी चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। So there are two cases, we can take two cases. Case number one, if the object is placed at the one focal length away or less, we get an erect image, magnified and virtual image at a distance so that it can be viewed comfortably, that is at the distance of 25 cm or more. हमें मालूम है कि least distance ह्यूमन आई की कितनी होती है बच्चों, 25 cm। इट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट की इमेज 25 cm पे बन रही है तो हमें वो इमेज क्लियरली दिखाई दे जाएगी। Now come to the case number two, if the object is placed at a distance of focal length of the lens, we get the image at the infinity। अगर ऑब्जेक्ट लेंस के फोकल लेंथ पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, इन्फिनिटी पे, यानी बहुत ही दूर बनेगी। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं ना। अगर इमेज डी पे बन रही है, इट मीन्स द इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, वी कैन यूज यू इक्वल्स टू माइनस डी। ओके, इमेज अगर डी पे बन रही है तो हम लोग यहाँ पे यू की जगह माइनस डी पुट कर सकते हैं, हेंस द लेंस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज। Now case number two, if the object is placed at a distance f of focal length of lens, we get the image at infinity. Okay, now come to the mathematical expression of the magnification. First one, when image is at. Now students, अगर image d पे बन रही है then we will use the lens formula, that is 1 upon v minus 1 upon u equals to 1 upon f, that is equals to 1 upon v minus, मतलब हमें करना क्या है, पूरी इक्वेशन को अगर हम u से डिवाइड कर देंगे so it will be 1 minus v upon u, that is equals to v upon f. So v upon u, that is equals to 1 minus v upon f, and now we know the magnification, that is equals to m. So m equals to what, 1 minus v upon f, because we know that m equals to v upon u. Okay, this is your v upon u. Now if the image is formed at d, that is v equals to minus d, okay, then we can replace m equals to 1 minus v की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है बच्चों, माइनस d, तो it will be m equals to 1 plus g upon f. Now if the image is formed at the d, that is v equals to minus d, the formula will be m equals to 1 plus d upon f. Now the equation is used to find out the magnification of simple microscope when image at d, that is a d equals to 25 cm. Now come to the image at infinity. अगर image infinity पे हो तो क्या होगा बच्चों, if you can see the diagram, okay. Now if the object is placed at f, the image formed at infinity. Object अगर f पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, infinity पे बनेगी. In this case the magnification will be equals to the angle subtended by the image at I, that is theta I, and the angle subtended by the object at I, that is theta naught. यानी यहाँ पे magnification हम calculate करेंगे in terms of angle. Now suppose the object has a height h and the angle subtended it will be equals to tan theta naught, that is equals to h upon d, that is equal to theta naught equal to h upon d. Why we have replaced this tan theta, हमने tan theta को क्यों हटा दिया, because we already know कि अगर एंगल बहुत स्मॉल होता है तो we can replace tan theta by theta और sin theta by only theta. तो यहाँ पे हम कहेंगे कि where d is the comfortable distance of the object from the eye, this is the least distance region. But you can see the diagram here, this is your theta I, this is your theta I, this is the height of the object, and after a particular angle और जहाँ पे object की image बनेगी वहाँ से हम height of the या फिर image की angle भी calculate कर लेंगे. Now when the final image is formed at the infinity, then you can say that theta equals to h dash upon v, where h dash is the height of the image and v is the image distance. But students, we know that m equals to h dash upon h, that is equals to v upon u, or by this formula you can say that h dash equals to v upon u into h. Now we have to do substitute equation number 4 in equation number 3, जो पहले equation लिखी थी वो in the terms of angle. So theta equals to v upon u into h upon v. So यहाँ से बच्चों ये v से ये v कट हो जाएगा, बचेगा क्या, थीटा equals to h upon u. इसको इक्वेशन नंबर 5 नेमिंग कर देते हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 5 इन प्रीवियस इक्वेशन, दैट वाज इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो यहाँ पे हमें m की वैल्यू मालूम है, दैट इज योर थीटा i अपॉन थीटा नॉट. तो हमें मिल जाएगी बच्चों, थीटा i की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली.
ओके, और थीटा नोट की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली थी, तो यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों h/u डिवाइडेड बाय h/d। तो इस h से ये h कट जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, ओनली d/u। इट मींस m इक्वल्स टू d/u। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है बच्चों, f पे, तो यहाँ पे u को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, f से। सो फॉर्मूला विल बी m इक्वल्स टू d/f। Now student, this equation is used to find out the magnification of simple microscope when the image is at infinity। जब इमेज इन्फिनिटी पे हो तो उस केस में सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज m इक्वल्स टू d/f। नाउ कम टू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम apparatus की बात करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या क्या होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस, वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड अनदर वन इज कॉल्ड आईपीस। जो ऑब्जेक्ट के पास में रखा रहेगा उसको ऑब्जेक्टिव बोलेंगे और जो आईज की डायरेक्शन में रखा रहेगा उसको आईपीस बोलेंगे। द कॉन्वेक्स लेंस नियर टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड द कॉन्वेक्स लेंस नियर टू द आईपीस या फिर नियर टू द आई इज कॉल्ड योर आईपीस। नाउ नेक्स्ट वन, द टू लेंसेज आर फिक्स्ड एट द टू एंड्स of two coaxial tubes and the distance between the tubes can be adjusted। ये जो ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर दो लेंसेज लगे रहते हैं, इनकी डिस्टेंस को हम एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी द डायग्राम और सेटअप ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दिस इज द आईपीस, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज जो बन रही है बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्टिव वो यहाँ पे बन रही है बच्चों, और ये इमेज अब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो इस इमेज की वापस से इमेज बन रही है बाय यूजिंग दिस लेंस, वो यहाँ पे बन रही है बच्चों। ओके, यू कैन सी कि इमेज मैग्नीफाई होके बन रही है। ओके, नाउ वर्किंग, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द f एंड 2f। ऑब्जेक्ट को जो होगा बच्चों वो f और 2f के बीच में ही प्लेस करना है ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। The objective lens form a real inverted and magnified image, that is I1 M1 on the other side of the lens. Okay, now the image will act as a object और eyepiece। जो image होगा वो अब object की तरह act करेगा, किसके लिए, eyepiece के लिए। This is for eyepiece। Thus an enlarged virtual and inverted image is formed। This image can be adjusted to be at the least distance of the distinct vision D। ओके, जो इमेज बन रही है उसको इस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे कि वो आपके लीस्ट डिस्टेंस बने, एटलीस्ट डी पर तो बने। ओके, नाउ कम टू द मैग्निफिकेशन। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप m इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला है। नाउ m इक्वल्स टू I2 M2 डिवाइडेड बाय OB। तो बच्चों जो प्रीवियस केस में जो डायग्राम था उस डायग्राम को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि m की वैल्यू I2 M2 डिवाइडेड बाय OB के इक्वल होगी। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस बाय द I1 M1। क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। सो अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं I1 M1 से तो बच्चों हमें मालूम है कि m जो होता है वो होगा I2 M2 डिवाइडेड बाय I1 M1, यानी m इज द मैग्निफिकेशन फॉर द आईपीस। सिमिलरली m इज द मैग्निफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव। सो इट विल बी इक्वल्स टू I1 M1 अपॉन OB। ना यहाँ पे हम इसकी जगह I2 M2 अपॉन I1 M1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, ME, और यहाँ पे बच्चों I1 M1 अपॉन OB की जगह क्या पुट कर सकते हैं, दैट इज MO। सो MO एंड ME जब हम इसे पुट करेंगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ME इनटू M0। इट मींस आईपीस एक्ट एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, देयरफॉर ME दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस D अपॉन FE। So M0 equals to V0 upon U0. Now we know that the magnification of the objective lens, okay, that will be denoted by the same formula, that is magnification equals to size of the image divided by the size of the object, where V0 and U0 are the distance of the image and the object from the objective lens. Now substitute this value, substituting 2 and 3 in equation number 1 जो हमने previous slide में लिख दिया था, that is equals to the final result आएगा that will be equals to M equals to minus V0 upon U0, bracket start 1 plus D upon FE. Now for the compound microscope we can consider that U0 is very greater than F0 because the object is placed very close to the principal focus of the objective, and V0 is approximately equal to L, that is the length of the microscope, because the first image is formed is very close to the eyepiece. So that is the formula of the magnification, that is M equals to minus of L upon F0 1 plus D upon FE। वैल्यूज पुट करने के बाद ये फॉर्मूला मिल जाएगा। नाउ वेयर L is the length of the microscope, F0 is the focal length of the objective lens। Now come to some cases। Now case number 1, if the final image is formed at the infinity, the magnification of eyepiece, that is D, that is M equals to D upon FE। Now the total magnification of the compound microscope, that is M equals to minus V0 upon U0 into D upon FE। So M को सिंप्लीफाई करेंगे तो M will be equals to minus L upon U0 into D upon FE।
Okay, this is about your compound microscope. Now come to the telescope. अगर हम टेलीस्कोप की बात करें तो बहुत बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत दूर रखे हुए हैं उनको देखने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज योर टेलीस्कोप. इसमें हम दो टाइप के टेलीस्कोप पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज द रिफ्रैक्टिंग टाइप एंड सेकंड वन इज द रिफ्लेक्टिंग टाइप. नाम से लग रहा है बच्चों, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हम रिफ्रैक्शन फिनोमिना देखेंगे, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हम रिफ्लैक्शन फिनोमिना देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. You can see the diagram of the refracting telescope. This is the convex lens, this is also the convex lens. This side of convex lens is known as the objective, this one is the eyepiece. Okay, now it consists of two convex lenses, one is called objective and another one is called the eyepiece. These two lenses are fitted again in the two coaxial tubes. The distance between the two lenses can be varied. दो लेंस के बीच की डिस्टेंस है हम इसको वेरी कर सकते हैं. Now come to the working. The objective lens forms the image, that is IM, of the distance object at the focus. ओके, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो इमेज फॉर्म करेगा. इमेज को हम कैसे डिनोट करेंगे बच्चों? IM से. और कहाँ पे बनाएगा बच्चों? फोकस पे. नाउ दिस इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इज एडजस्टेड टू बी फोकस of the eyepiece. Okay, now come to the magnification. You know already what is the magnification. Okay, the magnifying power of the telescope is the ratio of the angle subtended by the image at the eye to the angle subtended by the object at the objective. M equals to beta upon alpha. But from triangle CIM, बच्चों प्रीवियस जो डायग्राम में हमने प्रीवियस स्लाइड में जो डायग्राम देखा था उसको देखना. That is from triangle CIM, that is tan alpha equals to IM upon IC. Hence alpha equals to IM upon IC. बच्चों देख ध्यान रखना, tan alpha में tan हमने हटा दिया है. Again the same reason. Okay, for small value of tan alpha that is equals to approximate alpha. Now in triangle C dash IM, that is tan beta equal to IM upon IC dash, it means beta equals to IM upon IC dash. Now हमें क्या करना है? अल्फा और बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. सो m इक्वल्स टू IM अपॉन IC डैश डिवाइडेड बाय IM अपॉन IC. सो ये IM से IC बच्चों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. हमें क्या मिलेगा? IC अपॉन IC डैश. बट अगर हम IC की बात करें तो IC इज व्हाट? दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड IC1 इज व्हाट? दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, the focal length of the eyepiece. It means we can say that m equals to what? That is your f naught into fe. Now in this case the length of the telescope tube is f naught plus fe. Okay, आपने देखा होगा डायग्राम में एक ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों के बीच में जो फोकल लेंथ था वो फोकल लेंथ कोइंसाइड कर रहा था. इट मींस द लेंथ should be the sum of the focal length, that is equals to f naught plus fe. When the image is formed by the object is within the focal length of the eyepiece, then the final image is formed at the least distance of the distinct vision, in this case the magnifying power. Again this formula we have used, that is m equals to f naught upon fe, that is into 1 upon fe upon d. Now come to the refracting type telescope. Okay, in refracting type telescope, this is the diagram of the refracting type telescope. Newtonian type refracting telescope. Okay, now the Newtonian type refracting type telescope consists of parabolic mirror made of an alloy of copper and a tin. Okay, the parallel ray from the distant star. Okay, बहुत दूर से किसी स्टार से इस पे parallel rays आती हैं, incident on the mirror M1 and after reflection. Okay, पहले वो इस पे incident करती हैं बच्चों. Okay, this is M1 mirror. Okay, and after reflection from the mirror the ray incident on the plane mirror. Okay, and that is M2. It is sometimes we use the convex mirror also. Okay, plane mirror भी use करते हैं और convex mirror भी use करते हैं. Okay, so you have to write the convex mirror. Okay, convex mirror M2. तो यहाँ पे हमने convex mirror use किया हुआ है तो ये रेज पे जाएंगी इस तरीके से, यहाँ से रेज आ रही है रिफ्लेक्ट होके आपके आईपीस तक पहुंच रही हैं. ओके, सो दिस इज योर न्यूटोनियन टाइप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 9, दैट इज रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. आई होप चैप्टर समझ में आ गया होगा.